अच्छा okay. Last time we have covered lab 5 and 6, and also we covered one session in Visio. And today we'll start from lab 7 until we'll cover as many topics as we can today, okay? Depending on the feasibility of the time, okay? Okay, let's start. So open your AutoCAD. So lab 7. So lab 7, we have 4 commands. Already we have covered these commands, but again we'll start, okay? Just to revise it. For example, arrays. Arrays we are doing first time. Oh, bhaiya, hello. Arrays command is arrays and then move and then fillet and chamfer, okay? All 4 commands. So in the modify, these commands are available. Last time lab 5, lab 6 also covering the some commands in modify. Lab 7 also covering the same, okay? So let's start. And वेरी गुड ये जबरदस्त. इन्होंने ये देखे बना ली. अभी एक इमेज एक छोटी सी बनाई है. तो अगर हम इसमें मिरर की कमांड यूज करें तो इन्होंने ये बना ली है, ये वाली. ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये इधर मैं नहीं बनाता, ये आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. ये स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. तो ये जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये इन्होंने उधर बनाई है. कैसे बनाई है बोला आपने? आपने इससे बनाई है ना? हाँ, इससे बनाई है. ठीक है, सप्लाइन से बनाई है. ठीक है, तो सप्लाइन से. अच्छा, मूव की कमांड भी हम यूज करना चाह रहे हैं. अच्छा, दोबारा बना के, यही दोबारा बना के दिखा दें जरा इनको. ये बनी रहने दें, साथ एक और बना दें इस तरह की. एक सिंपल आपने लाइन ड्रा की है, अर्थो ऑन कर लें, सिंपल लाइन ड्रा कर लें. ठीक है, मैंने भी लाइन ड्रा कर ली. ठीक है, जिस तरह इन्होंने की है. अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया है? सप्लाइन पे क्लिक किया. एक मिनट जरा, सप्लाइन पे. अच्छा, करें सप्लाइन पे करके आपने क्या किया? एक किया है. अच्छा, इस तरह दूसरा. वेरी गुड जबरदस्त. ठीक है, रजिस्टर नहीं. हेलो ब्रदर, डू यू नीड दिस रजिस्टर during session? You need this or not? I want to write something. Wonderful. ठीक है, आप दोनों का रोल नंबर क्या? 191 215 जबरदस्त. अच्छा चलें, अब आप ड्रा करें. इसमें आपने सप्लाइन में जाएं. ड्रा में सप्लाइन है. सप्लाइन आपने फिट पॉइंट लिया है या कंट्रोल वर्सेस ली है? इनमें से कौन सी ली है? Which one you have selected? Just वहां से देखें जरा कौन सी है ये. अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास. ठीक है, तो फिर हो सकती है आपकी फिट वाली हो ना. फिट वाली चले ले आप. ठीक है, तो आपने इसको कैसे किया? क्लिक किया. अच्छा, अर्थ हाँ, यस. आपने इसको किधर लेके, पहले इधर लेके इधर ले और यहाँ ले गए. थोड़ा सा आगे एंटर से आप कैंसिल करेंगे ना, एंटर करेंगे. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ही बना लें. ठीक है, बन गई. जबरदस्त. अच्छा, अब आप इसको मिरर की कमांड से आपने यही आपने रेप्लिकेट करना है दूसरी साइड पे. ठीक है, लेकिन मिरर की कमांड से करना है. तो अर्थो ऑन कर लें तो आपको इजी हो जाएगा. बीच में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू ड्रा द लाइन इन बिटवीन जस्ट फॉर अप्लाइंग द मिरर कमांड. Just you will just go to modify and there is a mirror. Just click the mirror and it will say select the object. So you can select the object which you have drawn with the help of spline. Okay, this left portion of the object. Okay, you will select this spline and press enter. When you will press enter, it will say specify the first point of mirror line. So first point will be the center of the line. This horizontal line you want to place this the mirror of this or the mirror image of this this spline line in the right side and to the end of the line on the right side. So it means you will take the midpoint of the line, horizontal line midpoint. Okay, so midpoint is the, you can see my screen. Just I click the midpoint. Yeah, midpoint. You can see ortho will be on. Just ortho on. If ortho will be on, then you will see exactly it will
Ortho, yeah, ortho is on. Okay, yeah, you can see. Now you can see that it is placing. Yeah, again, just repeat. So when you will see that the image is replicated or mirror image is placed, you will move your cursor along the y-axis. When you see that the mirror image is already placed, at that point you will left click the cursor, okay? And now it's placed. Done. Yeah. Yes. And then again you will press enter again. Otherwise it will disappear because it is asking in command window. In command window, it is asking that you will erase the source object or not. So by default, no. Means you don't want to erase the original object. You want to create the mirror image, but don't want to replace. Oh, भाई जब बात जल्दी बैठ अच्छा yes, then press enter. We don't want to delete the source object. Otherwise, then it will be. Yeah, they click it here, left click. Yes. Now you will again in the command window, it is asking that erase the source object, and by default is no. So no need to write n because no already there. Just enter. So it will be placed. But because your end point of the suppline was far away from this, so they are not overlapping. Okay. Otherwise, now you have to manually you can just again use the supply line command. I have extended the supply line end point of the supply line. I extended more, so you can see my image is just drawing is supply lines are overlapping. Yes. Space आ गई है नहीं एक लाइन बनाई एक ड्रा किया और उसका फिर मिरर की कमांड लास्ट में हम यूज कर चुके हैं मिरर की रिपीट हो गई आज जस्ट मिरर की कमांड से किसका हो गया ये सबका हो गया ये सारी हो गई सबकी हो गई क्या किसका हुआ पहला
अच्छा आपने आपकी कमांड तो कमांड में क्या है कैसे करें तो उसके बाद हमारा कैसे आने ये कोई इसमें राइट करते हैं कमांड में आगे क्लोज करें तो कैसे क्लोज करें क्लोज करते हैं ठीक है उसके बाद दोबारा इसको ये करें जो बस ये आपकी है ना थोड़ी सी ज्यादा निकालने की तो आप लोगों को should be the length should be more so that there can work. Why this is not same? Because if you are saving this, if you are saving this, then it means if you are saving this, for example, 45, if you are using this one, and you are writing this one, अच्छा जिनकी तो ओवरलैप नहीं हुई तो वो ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, जिनकी ओवरलैप किया वो ट्रिम कर लें। तो मॉडिफाई, गो टू मॉडिफाई,
बस आप ओवरलैप कर लें, एक को एक्सटेंड करें इस तरह और दूसरी को इस तरह एक्सटेंड करें, क्रॉस बन जाएगा ना, ये आखिर में एक्स्ट्रा लाइंस होगी, देन वी विल ट्रिम इट, ओके। If your end points of this object are not meeting, so not crossing each other, you can extend with the manual line spline. Just again apply the spline line command and just extend end point of both lines, both spline lines. They will cross each other and then the extra points will trim or delete with the help of trim command. So here you will extend again. For example, they have extended the lines in the second triangle. Now they want to trim this one, these two lines, extra lines. So go to modify, trim command. We already used in last lecture, trim command, and then select the both lines which are crossing each other, and then right click, left click, both select, and right click or press enter, okay, and then again left click on the extra lines or extended lines, left click, it will be deleted, and escape command end. So in this way you can done. Now you can color it, gradient, draw. In the draw, just click the gradient and pick point, add pick point and color it like this, and choose the color, different color, for example red, and I will choose green and white, like this. Close the hatch command. So in this way you can color it. Trim, select this one and this one, okay, and right click, enter, right, okay, enter, okay. Now click the end. अच्छा, escape press करें, escape. We will go to modify. There is a trim command and we'll select the two lines which are extended or crossing each other, then right click with the help of mouse, right click. Yeah, not enter, right click is okay. Enter also working, but why your enter not working, I don't know. Now enter again, it will say no, left click, yes. So it will be like this, okay. अब ये वाली बनाए, ये वाली, ये आप भी बनाए, ये बनाए, ये ट्रॉफी है, क्या चीज है, ट्रॉफी है, फीफा ट्रॉफी बनाए, ये वाली, ये यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, यू कैन. So I will draw circle. I will draw circle. Then I will draw niche. सर्कल का सेंटर पॉइंट भी आपने अप्लाई करना है, ऐसी है ना, डायमेंशन में जाके सेंटर पॉइंट लिखे, इधर सेंटर था ना कहीं, सेंटर मार्क है इन द डायमेंशन, देयर इज अ सेंटर मार्क, यू कैन सेंटर मार्क द सर्कल. लेकिन इसकी लेंथ बढ़ाने का भी मैंने बताया था, सेंटर मार्क की लेंथ अगर बाहर एक्सटेंड करनी हो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाके, हाँ यस, डायमेंशन स्टाइल में जाए, चले. You go to dimension style and just modify, and in modify just कहाँ था वाला, इसमें था, फिट में नहीं था, सर्कल का किधर आएगा, सिंबल्स एंड एरोज में जाएंगे, ठीक है. सर्कल का जो आपका सेंटर मार्क है, यू वांट टू एक्सटेंड सेंटर मार्क बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल्स, so it means you will go to dimension style, just write D in the command window or just go from the with the help of dimension, and here you can see mark, center mark you will 0.09, so you will increase it to, for example I will say 10 for example, okay, standard set current, okay, close. So it's not applied, so it means you will delete the previous one and again try, and again in the dimension there is a center mark, select the circle, yeah, now it's placed, okay.
वेरी गुड। ये अच्छा सेंटर मार्क भी प्लेस करें पहले, ये सर्कल का, इससे हाँ इसका आप करें जरा बेट। अब इस सेंटर मार्क को आपने सेंटर लाइन से करना है। दिस सेंटर मार्क शुड बी this line is continuous line, you will convert it into center line. So center line, from where you will get it, you see that there is the lines, and line says there is an option of line type, and line type is you can see line type में जाएं, देखिए आपके ऑप्शन किधर आ रहा है line type का। line type in properties there is a line type, and you can also select it, right click and properties, go to properties, also this option is available, and then you can select the line, right click properties, and in that line types, my line type is visible in front of me, and I will just click it here and I will load it. This repetition we are just repeating, and I will select the center. Okay, center, I will select the center line, this center line. Okay, center line, for example center line, center, simple center line. Okay, so I will click it, I will click OK. You see, no, it is converted. Okay, yeah. The other, now my line is converted into center line. Okay, the center point of the circle is converted into center line. So यार इसको ना वहां से सेट हो, जो होने वाला है ना उससे सेट होता है। The horizontal line is smaller as compared to vertical line. Center lines, two center lines are different. The vertical line is bigger and these horizontal line is smaller. So how you make it small? Yes, you can manually drag and left the right, but it will be smaller. And then you want to move it towards center. Just select this line and center point towards center like this. So in this way, ठीक है, आप भी करें। देखे ना मैंने किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर, तो you manually can extend the center lines, one line bigger, other smaller, and also you can move it towards center. And the rectangle of the trophy, which is the bottom part, right, rectangle of the trophy, you want to move it, so you will use the move command, because today is also move command. So how to move command use? Modify. There is a move command. I will select the move command. I will select the object, and then it will say the specific base point. I will specify the center as the base point. Center of the rectangle as the base point, and then O snap should be on. Your O snap should be on, because O snap will help you. What is the end point? What is the midpoint of the object, like that? So now you will see when you will move this rectangle towards on the vertical center line of the center, on the center line of vertical center line. Okay, you will move it, and wherever you want to place, you can place it. Is okay, done like this. हाँ, ग्रुप करके कर सकते, वेरी गुड। आप ग्रुप करके मूव, वो जब आप कंप्लीट बना लें तो उसके बाद ग्रुप करके मूव करें, डेफिनेट, जबरदस्त, दैट्स वन। रोल दिया है 1 2 3, चलिए आगे से।
अच्छा ये कैसे बनाया आपने, ये वही सप्लाई लाइन से? वेरी गुड. So you will connect the circle and rectangle of trophy with the help of supply line. One supply line you will draw and other you will use the mirror command so that the exact line will be mirrored. So in the draw there is a supply line. I will click at hit point supply line. Ortho must be off if you want to draw the supply line. Ortho must be on, otherwise it will create the problem. Okay, because ortho only x-axis y-axis. Supply line you will not see the changes. एंड भी साइड हो जाएगा, एंड क्यों नहीं होगा? आप वो स्नैप ऑन नहीं आपका, if वो snap is on, end point anything you can select, center end point like that. भी मूव कर सकते हैं. When you will draw this supply line you can manually adjust it. सर्कल के जो अंदर जा रही है ना सर, इसको दो स्पेसिफिक पॉइंट दे देना तब आप नीचे कर सकते हैं, फिर वो ऊपर वाली फिक्स कैसे कैसे. एक मिनट जरा मैं जाता हूँ सप्लाई. अच्छा मैं मैं इधर लगाऊं, अब क्या करूं? यहाँ पर 2 पॉइंट. अच्छा 2 दे दूं. अच्छा अच्छा, एक पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, एक यहाँ दे देता हूँ, अंदर करके just go to spline and then click. ये अंदर करके एक दिया, दूसरा दिया और फिर उसके बाद मैंने हाँ वो शुरू में कह देते तो और अच्छा. हाँ इस पॉइंट को इधर भी आप मूव कर सकते हैं. अब कुछ बेहतर. सो इसको हम जो है ना वो मिरर कर देते हैं. just go to mirror and already selected specify first point. Ortho should be on. It will be easy for you to just mirror center point and it will be placed and enter. So done. So our trophy is done. Trophy का कलर क्या होता है फुटबॉल की? ऊपर बॉल किस कलर की होती है? Ball is white color. Trophy ball is white, so you will color it white. And नीचे क्या होता है? Rectangle. Rectangle रेड की होती है. सर अभी तो गोल्डन ऊपर से गोल्ड. अच्छा नीचे वाली गोल्ड करें, नो गोल्ड कलर करें. गोल्ड को यार अच्छा इसको है ऊपर बॉल को आप ट्रॉफी जिस तरह की होती है अपनी बनाए वाली ट्रॉफी, जो आपने ट्रॉफी देखी है उसका कलर डिफरेंट करें. बॉल का डिफरेंट, नीचे डिफरेंट और सारा डिफरेंट करें. Every you will color circle separately and close the command. Then again color rectangle different with the different command. Otherwise same command if you will apply, you want to change the color, all color will be changed. So keep it in mind. ठीक है, ये इस तरह बन गई, आप भी बना लें. So who have done this trophy? Well done, complete, colored. कलर भी करें, जिसका कलर हो गया वो बताएं. Like this you can see my screen.
Done? Very good. और किसी का हो? किसी का हो गया आपका? मुझे वो जो रेलवे को एप्लीकेशन लिखी है ना वो मुझे फॉरवर्ड कर दें जरा वो जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड में फाइल करते वक्त मैं एडिट भी कर सके ठीक है PDF वर्ड दोनों कर दें मुझे ठीक है जब करेगा सो डन चलें ये बात आगे चलते हैं so the next one is काफी है ये बस आगे चलते हैं so now we want to use the erase command okay so first command is erase for example you can draw some objects for example rectangle you can draw rectangle then you can draw the circle for example here okay and then like this you draw just like what I have done just draw this like one draw this just rectangle and then draw the circle like this now you can see yeah no in this way you see there is no balance between the two lines so if you want to balance it first option is just to select this rectangle or you can say just move command just go to move command and select this rectangle press enter and you want to move this towards center of the circle huh? So what is the center of the rectangle center of rectangle is कौन सा यार ये है ना just click the center of the rectangle and just go towards center of the circle and click so move command is you can say with the help of move command you have moved this rectangle exactly at the center of the circle huh? The center of the rectangle is moved towards at the center point of the circle like that so in this way you can balance each other move command and also if you need more copy command like that so it's done so now you will see if you will select this rectangle for example just select this rectangle you will say
complete rectangle will be selected. And if you will select the circle, complete circle will be selected. Yeah. Now go to modify, and there is a explode command in the end. In the end, there is an explode command. This is additional command, not the part of this today's session, but explode command. In the end of modify commands, explode command, last command in the modify option. Just click this and you will say select the objects. You can drag all the objects you want to select. For example, left click here and then move your cursor left click at the right top left, and then move your cursor towards bottom right, and then again left click. Only rectangle selected. Okay, you can manually select again, left click the circle. Circle not selected, huh? Only rectangle. Huh? Circle is not selecting. Huh? Only rectangle. Okay, you can select the rectangle. Okay. Use the explode. Yes, rectangle selected. Circle not selecting. Yeah. Okay. So circle is not in the vicinity of this command. Okay, no problem. Just rectangle. Only rectangle. Okay. Only rectangle. Huh? Yes. No press enter. No done. You will now you select the rectangle. Just try to select the side of the rectangle. You will see all the sides are splitted. Now rectangle is not one entity. It is combination of 4 lines. Okay. So in this way, any object you can explode. It means you can convert it into by parts. Huh? Yeah. So now by parts done. Now we will use the trim command. I want this shape. Go to modify. There is a trim command. Select the circle. Select the whole rectangle. And right click, and then you want to delete, for example, delete this one. Can be deleted. अब इस सब्जेक्ट में कोई any line you want to trim it, or you can erase it also. I think so. You can erase, modify, erase. Just select this line. For example, you want to erase this line. You want to erase and press enter. So if you want to erase the line, any line, just select that line. As many lines as you want to erase at once. Okay. Just click the erase command. Select the lines. As many lines you want to erase, then press enter. Those lines will be erased. Okay. So erase command is done. Okay. Erase done. Move is also done. I think so. If you want to again we'll start move command just to move the rectangle towards center of the circle. Huh? Just draw the circle, separate circle. Okay. Just draw again draw the circle. For example, this circle. Just draw. Okay. Done. And draw the rectangle anywhere. Okay. Rectangle. Now we want to move this rectangle at the center of the circle. Okay. So go to modify, move command, select the rectangle. O snap should be on. Okay. Select the rectangle, press enter. Specify the base point. So base point should be the center of the rectangle. Okay. Just click the center of the rectangle. Now it will be moved. You will move it and you will click again at the center of the circle. Rectangle is moved towards the center of the circle. Yeah. Done. Yes. So move command done, erase command done, and then there is a fillet. So fillet, you can see here, we have the one lab task. I will show you on screen. You see here, this option like this. You see the lab task 2 of lab 5 task number 2. Here, this task will be completed. You can complete this task with the help of fillet command because there are the round corners of the rectangle. Round is just with the help of fillet. So again, this rectangle, you have this, draw another rectangle. Okay. Just draw another rectangle like this. Okay. You can fill it with color, just it be attractive. Huh? Like this. So now you want to fillet it. So fillet it, just go to modify. There is a fillet command. Just click the fillet command. And then in the command window, it will say that there is an option of radius. Okay. You will click the radius, or you will type R in the command window and then press enter. Okay.
Just click the fillet command in the modify menu. In the menu bar, there is a modify option. Just click fillet, and then it will say in the command window, it will ask you multiple options. There is one option, radius. So for the newer version, just click the radius, or you can type R in the command window and press enter. Radius command is active. In the fillet command, the sub command of radius is active. Okay, done. Yeah. Now you will specify the radius. For example, I will say radius is radius is 5. For example, 5, and press enter. And now it will say select the first object. So now you will select both lines which are you can say any corner which is a corner which is a combination of two lines. Those two lines you will select, okay, which you want to round it. Just click this one and this one. You see, done. Fillet is done. So this fillet, this actually round corner is actually the circle, is the part of circle, and that radius of the circle that you have set 5. So it is 5. Okay. Again. Yeah, radius R. Just click R. Type R. Press enter. Yeah. Now type the radius 14. This is radius 14. 14 is much bigger. Maybe when you will write bigger size than the rectangle, then it will say invalid. It will not be applied. Okay. So if it is not applying, it means you have entered the wrong radius. Okay. So maybe 5 is okay. 5. Just click 5. Write 5. 5 and enter. Yeah, enter. Now you will go to there and just click this line and this line. The next one line. You see, rounded. That you see escape. Yeah. You see, this is rounded with the radius of 5. So now this one you will do the radius 10, 20, and 30. Again, do please. 10, 20, 30 are maybe one. अब 10 करें, modify fillet radius is 10. Then you select this line and this line. You see, in my command, 10 is out of bound, out of limit. So for me, is 10 not applicable, okay? Because 10 is bigger than the size of the actual rectangle. So 5 is okay, mine. Or I will apply 2, for example, and you will apply by your own, okay? Just change the, just to want to see the difference. I will say 3, and I will select this one. Yeah, this one not done. Yeah, this 3. This is 3, okay? And again enter. If you want to continue this fillet command as many as possible, then when you will fillet one corner, then again press enter. That command will continue. You can continue that command. No need to every time activate that command, okay? Just press enter. Again, click the radius, and you see, if you want to don't want to change the radius, only radius 3 you want to, then no need to click the radius. Just click the end points of the lines, and you will see it will done. Because mine is radius is big, so I will. Yeah. So in this way, enter, and then again I don't need radius. The previous by default radius is okay for me. Then no need to click radius. Click enter, and just click the lines. Let's go. रेडियस सप्लाई नहीं किया तो वो उसने बाय डिफॉल्ट जो है ना पूरा सर्कल बना दिया। अच्छा मैं पूरी लाइन की करता हूँ, कंट्रोल C करके will go to modify, and then there is a fillet. पूरी लाइन में करें। अच्छा पूरी लाइन में करता हूँ, फिर क्या होता है? पूरी लाइन से तो ये हो रहा है इस तरह। पूरी लाइन नहीं है, कुछ और है ना, कुछ और चले बैरल जो भी वो मल्टीपल ऑप्शन यू कैन यूज। सो डन। Okay, I think so done. Then there is a chamfer. रेडियस के लिए ट्रिम किस तरह?
ट्रिम भी आ रहा है, ट्रिम किया आपने, क्या आता है उसे भी सेम होता है। अच्छा चलिए करें आप, मैं भी करता हूँ, ट्रिम की करें, ट्रिम से क्या होता है, ये वाला ट्रिम कह रहे हैं, ये वाला ट्रिम, ट्रिम। अच्छा ट्रिम में करता हूँ, 1 करता हूँ, ट्रिम मोड ऑपरेशन। ट्रिम से तो नहीं हो रहा हमारा, दोबारा करें जरा ट्रिम से। करना क्या है, आप ट्रिम की मोड बाकी भी मान क्या आप ऐसे करें, इसको करें। वो असल में आप मान लिखते हैं ना, मान में वो करें वो हो चुका है, वो बहुत कम। Okay, let's start again. So there is the option chamfer, chamfer. So again draw the rectangle. Just draw the rectangle. Draw the rectangle and fill it with gradient. Any color. Just fill it. ठीक है. Okay, now go to chamfer. Modify. There is an option chamfer, chamfer. And in the chamfer there is an option, sub option distance. Okay. So write D and press enter. Write D and press enter. D and press enter. And now it will say specify the first chamfer distance. The first distance, for example, 5. The second distance is 10. Second distance is 10. Press enter. Now again the same for as fillet. Just select the lines. And you see my 5 and 6 is out of bound because maybe you're applied. Just click the again 2 lines which are combining at there's one corner. The one corner which is done. So you see the chamfer is actually from the corner, one distance is 5, from the corner other distance is 10, and those points are combined. That is chamfer. So chamfer is just, you can see the points which are not at right angle, not at 90 degree. So in the go to chamfer, distance,
then I will say 1 and then second point 2, and then I will just click the 2 lines which are joining at the one corner point. I will click those lines first. You see here, yeah, it's done. So one distance is 1, and this, from the corner, one line is 1 point is at a distance of 1 and other is 2 point distance. These 2 points are combined, that is chamfer. Done? Who have done this? Very good. बस ठीक है, आगे नेक्स्ट अच्छा चले हाँ जी आगे चलें. So Chamfer is done. Now we'll go to lab 8. Lab 7 हो done. क्या कह रहे? फिर विजियो कर लेते हैं, कुछ विजियो कर लेते हैं. चलो ठीक. अच्छा लैब 7 का ये टास्क है, ये देखें, ये आपने आज करना है एंड पे, ठीक है. लैब 7 का टास्क 1 इज ग्रुप, यानी आपके C1 टास्क 1 कर लेंगे. ये देखें इसमें कैम्फर यूज हुआ है बस, और एक रेक्टेंगल है बीच में, सब रेक्टेंगल बनाई हुई है, ऐसी है. ये आपका ग्रुप इवन ग्रुप सारे कर लेंगे. ऑड ग्रुप सही है, C1 C3 C5. सो लैब 7 का टास्क 1 और टास्क 2 जो है, लैब 7 टास्क 2 जो है ना, वो इवन ग्रुप कर लेंगे. C2 C4 C6 C8 up to so on. ठीक. So lab 7 task 2 will be done by your even groups. Lab task 2, lab 7 task 2 even groups, C2 C4 C6 like that. And this group is lab task 1 will be done by odd group, C1 C3 C like that. सर बहुत सिंपल है. सिंपल है ना? दूसरा वाला
चलें जी, अब विजियो टास्क पे चलते हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल ड्रा द बिल्ड अ वायर फैन इन विजियो, ठीक है। वायर फैन बनाएंगे, वायर फैन। मेरी स्क्रीन को देखें तो इस तरह की बनानी है, ये देखें आपको, नहीं ये हमने ये डेकोरा हम जो है ना ये बना चुके हैं पहले, ये इस तरह का जो पहले इमेज बनाई है, यू विल रिटेन इट इन योर पीसी, बिकॉज वी विल यूज द विजियो previous drawings of the Visio we will use again and again, okay? So you have to save it in your USB every time, bring it with you, Visio drawings, okay? So previously we have drawn decora receptacle, you can say in the Google, if I'll write for example decora receptacle, बंद कर दें यार उसके पीछे, ये डेकोरा रिसेप्टेकल्स, ये इलेक्ट्रिकल आप देख सकते हैं कि 15 वोल्ट 125 वोल्ट डेकोरा रिसेप्टेबल you need for electrical connections. So decora receptacle we have done last time, we have done. You can see the screen in the Google, I have shown you. So today we'll draw again, you see my screen, we'll draw the wire fan, these wires black, bare and white, these wires we'll draw, and we'll connect these wires to this decora, okay? So wire connections, wire fan. Build a wire fan. This is our end product for today's session, end product. I am showing you end product, right? Now we'll start one by one just to draw this one. Decora we already done, so you can see on your screen may be available. Not maybe students saved decora, not saved. So Visio tasks, keep it in mind. If previous tasks what we have done you don't have, you can draw at your home and bring it with USB, okay? Then you work on this screen. That previous versions of all Visio drawings should be available, okay? Because we'll use it again and again, okay? Yes. And also you can save it. So you can save it. Okay, just open Visio. AutoCAD I will switch off. Save your work and just switch off AutoCAD because PC will be slow. So you can save your work, okay? AutoCAD, I will see your screen, okay? In AutoCAD in the end. So today we also see your individual screens for individual marks and then collectively for group marks. Black drawing, US units, okay? ये भी चला दे, गर्मी भी लग रही है। आज गर्मी क्यों है यार? एसी चलाएगा ना यार, एसी नहीं चल रहे मेरे को। कौन चलाएगा? एक बंदा चला दे यार। Okay, you can open first your. Okay, let's start. First draw these two lines, one vertical line, one horizontal line, okay? So you will also follow me, okay? Here go to lines, there is a line option. Just line, click line and just draw this line like a vertical line. And then there is a horizontal line like this. The distance between two lines should be more, huh? There should be a distance between two lines. Done? Yes. Click pointer because for old versions you will click pointer. There is a pointer tool just to end the previous command, okay? The previous command, if you want to add this previous command, just click the pointer. The command will be ended, will be finished. So done. Two lines are done. Yes, very good. Iska na view, just go to view and switch on grid. View grid. Yeah, grid is on, I think so. Again view. Yeah, grid is on, but maybe not visible. Okay.
So now you will go to there is an option of arc. There is an option of arc. Arc. There is an arc option, and will start from the arc and the end point like this. Then similarly end point here, and similarly midpoint. अच्छा चले with the help of arc just freedom वाली तो नहीं फ्रीडम वाली यूज करें मेरे ख्याल फ्रीडम वाली कह रहे हैं फ्रीडम वाली ज्यादा बेहतर है जस्ट यूज द फ्रीडम नॉट आर्क बिकॉज आर्क इज फिक्स्ड वी वांट टू जस्ट यूज फ्रीडम लाइन so freedom line is more okay just click the freedom and manually just like this one then there is a single line like this then there is a third line like this Zabardast. Okay, any random line, just no need to, you can say done. Oh यार ये क्या किया थोड़ी इस तरह तो हो ना यार कुछ बनती जोड़ती हो ना टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन देखें ये शेप देख ले मैंने इसलिए शेप पहले दिखाई है ये देखें ये शेप नजर आ रही है आपको ब्लैक वायर बनानी है बेयर एंड व्हाइट these three lines we want to make and the common point of all three lines is actually our horizontal line and the vertical point is end point of all these three individual end points in the end we will remove vertical line and horizontal line the remaining part will be this freedom line three freedom lines so like this so freedom lines done now you can delete the previous lines vertical line delete this and horizontal line delete this now this is done क्या हुआ फ्रीडम लाइन यस आप जरा इनको दोबारा बता दिस फ्रीडम लाइन यस ये बना रहने दे नीचे इनको दोबारा बना के दिखाते हैं या अच्छा जब बन जाए तो now go to corner rounding if it is done three lines are done simple three lines ये किस चीज का सिंबल है वैसे थ्री लाइन से कैसे बन रही है ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन ही होता नहीं एप्सिलॉन के दरमियान लाइन होती है यस एप्सिलॉन ही है यार बाय एप्सिलॉन बन गया ठीक है नो just go to corner rounding there is an option of corner rounding got the point corner rounding just click the corner rounding there will be a window format window shape now click the lines and a corner rounding yeah corner rounding that option available you can select the shape first and then go to corner rounding or just go to corner rounding and then select the shape the window will appear both options there so you will go to corner rounding where is corner rounding maybe in format पुराने वर्जन में कॉर्नर राउंडिंग किधर है जरा बताएं वेरी गुड ये किसने बताया प्रॉब्लम क्या है 73 ये आ गया ठीक है अच्छा इसमें आप ये करेंगे अब हमने कॉर्नर राउंड तो नहीं करना हमने करना है इसका साइज बड़ा करना है इसको साइज हम करते हैं 10 फॉर एग्जांपल 10 भी काम है 15 कर दे 15 जस्ट 15
You see the size is big. और बड़ा कर दें, और बड़ा कर दें, 20 कर दें, 20 था ना, 70 से आगे कुछ नहीं, कस्टम करें, कस्टम इधर लिखा है 20 लिख दे, 20 420 लिखे जरा इधर, कस्टम करें, जस्ट कस्टम, ओके, नहीं नहीं 20 दोबारा करें, हाँ अब हो गया, ठीक है, अप्लाई, जस्ट अप्लाई, अप्लाई, ओ माय गॉड, ओ बहुत ही हो गया, 20 नहीं, अगेन अगेन, जस्ट गो, मे बी just go to custom, just go to custom and change it to, for example, 20, for example 3, apply, okay, no it's smaller, just something like this, you see here mine, just something more, हाँ हाँ ये नहीं आ रही ना विंडो, ये आपकी कॉर्नर राउंडिंग वाली कैसे है ये कॉर्नर राउंडिंग, इनको बताएं जरा, इसको क्लोज कर दें, दोबारा बताएं, in format just go to corner rounding, नहीं ये किधर गए आप, format, no not line, no, just close it, no close करें इसको, format corner rounding, there is an option corner rounding, this one, हाँ उधर भी है, आपके ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, मेरे कॉर्नर राउंडिंग में लाइंस और एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, okay, so their option, individual option here combined, corner rounding, all options, lines, everything available, okay, so weight, you can change the weight, you can, like my screen, you can see there's a weight, change the weight to bigger size, huh? Weight, okay, and color it black, by default is black, is okay, the upper line is black, okay, done. 20 तो पहले किया था, 20 पहले तो, अच्छा पी को डिलीट कर दें आप, तो वो खुद ही बाय डिफॉल्ट ले लेगा, पॉइंट की जरूरत नहीं है, पॉइंट को डिलीट करें जरा, जस्ट आप 20 अपना लिखे, वो पॉइंट खुद ही ले लेगा, ओके करें, अप्लाई करें, हाँ ठीक है ना, इंचेस में आ गया ना खुद ही, वो बाय डिफॉल्ट लेगा ना, इंचेस है उसका बाय डिफॉल्ट, इंचेस में लेगा, आप पॉइंट क्यों लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे दोबारा इंचेस लिखेगा, जरा लिखे जरा 10 करके अप्लाई जरा, हाँ 10 हो गया, इंचेस वो खुद ही लेगा, इंचेस बाय डिफॉल्ट है, जस्ट यू डोंट नीड टू मेंशन इंचेस, हाँ ये ज्यादा है ना, तो आप इसको 2 करें ना, आपका तो ज्यादा, आप उस हिसाब से करें ना, 2 करके देख लें, यार उधर पॉइंट ही लिख लो ना, आप इसमें ना जाओ ना, आपको एक दफा समझ आ गई, इधर कर लें आप, देखें ना ये 0.06 है ना, इसको आप 1 कर लें, आपका 1 सी हो जाएगा मेरे ख्याल में, इंचेस को डिलीट कर दिया करो, ये देखो इतने कॉम्प्लिकेटेड ना पड़ा, सारा सेट किया करो ताकि आइंदा भी आपको टाइम बचे, ओके 1 करें, अप्लाई करें, बहुत ज्यादा है ना ये, गो डेयर, हाँ 0.5 is enough, I think so, 0.5 this is okay, I think so, and color is black is okay, done. the midpoint, just click the mid line, second line, and just again size it the same size, apply a little smaller size, because this is the bare line, bare conductor, this is actually the bare conductor, bare means no insulation around it, that means its size will be less, so half size, half than the other, almost half, 10, and color is, for example, this color, what is this name of this color, brown है, brown color कर दे, just brown, copper wire, you can see the copper wire at home, like that color. Brown color is okay, for a brown, so brown, done, brown color. Now the third one size is, again third one size is bigger than the first one, for example 20, mine 25, and the compound line I will change it to 2 lines with the white color spacing, like this, because this is white line, white cable, that is black cable, bare conductor, and then there is a white cable, a little bigger than the previous one, maybe you can say 0.6 is okay, 0.7 also okay, 0.7 is okay, 0.7 ठीक है जिस तरह उससे बड़ा ले लें, ब्लैक वाली, ब्लैक वाले से बड़ा करें पहले वाली से,
ओके कर, इसका कलर भी चेंज करें इसका। अच्छा इसकी लाइन टाइप चेंज करें इसकी। देखें ये कंपाउंड टाइप से मेरा चेंज हो रहा है, इधर देखें ये लाइन में कर रहा हूँ, डबल लाइन करते हैं, डबल लाइन विद वाइट स्पेसिंग। एंड डू यू हैव दिस ऑप्शन? नीचे एंड पे जाए, एंड पे कोई और नहीं है। अच्छा ये फिर आप किसी और जगह देखें, ऑप्शन है ये किसी और जगह। अच्छा ये लाइन ड्रा करें जिस तरह मैंने किया ना, थर्ड लाइन black color, but this line you will change the line type to two individual lines. Line type will be two lines with the white spacing. Done? Very good.
बल्कि नहीं इसमें ऑफसेट यूज करते हैं, ऑफसेट से करते हैं, ऑफसेट से करते हैं, ठीक है। मैं भी ऑफसेट का बताता हूँ आपको। आप ये करें इसको, ये देखिए आप एक लाइन है ना इस तरह, ये मेरी स्क्रीन चेक करें, ये देखें, ये स्क्रीन चेक करें जरा, ऑफसेट से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है जिसका अल्टरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट करें, just select this line, for example you will select the end line, third line, I'm just telling you this the center lines, okay. There is an option of format, okay. The format option is in the operations. Operations is where is operation? ऑप्शन नहीं है, देखो इतनी दफा हमने यूज किया, ऑप्शन नहीं है। ये देखो ये शेप्स में है, शेप्स में आप काम नहीं कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं आप। Operation repeatedly we are using. So there is an option, there is an offset, okay. Just click the offset and just first you will select the line which you want to offset. Offset means the line, repeating line beside that, So I will offset distance, for example I will ask 1 is much more, maybe 0.1, I will say 0.1. 0.1 is not feasible for me, is not feasible, you will adjust by your own, okay. For me 0.1 is not I will ask 0.5, maybe 0.3, maybe up. 0.3 is more, maybe 0.25, maybe 0.25. 0.2, 0.2, I will 0.2. 0.2 is okay, I think so. 0.2 is okay. 1.5. Then I think so, okay. 0.1. Middle line, offset, my offset is 0.1, okay. Then you will write the offset 0.1. There will be two lines, one at one side, the other is at the other side, okay. Then you will delete the first line, middle line, okay. So you will see there is a white gap and done. So this is alternate way, okay, for those people who are using the old version. Yeah, middle line, yeah, middle line is done, but you see the weight is ज्यादा, ठीक है, तो weight हम इसको काम करें। यार इसको सेट करो, ये क्या बना रही? आप आखिरी वाली करते हैं, मैं तो वैसे समझा रहा था, तो आप आखिरी वाली करनी थी, करें ना आखिरी इस तरह की बना के दिखाएं मुझे। So this shape, what you are seeing on my screen, this shape we need, okay. Have you done this shape or not? Same color, for example, brown color, middle line, upper one black color, solid line, the bottom one is two lines with the white middle point.
So for the old version, you will with the help of line, you will end the end point of two lines. Okay. Third line, the third line which are using, you are using two lines to draw this for the older version. Okay. So you can join the end points of the line just to make it one line, single line. Huh? थिकनेस कम करना मैं करनी उससे आप कर लो नहीं और नहीं इसको सिलेक्ट करें और थिकनेस के चेंज करें इसको सिलेक्ट किया मैंने यार पहले ऊपर वाली नहीं बना रहे आप नीचे से दोबारा शुरू कर दिया ऐसे करें फिर ऊपर बनी हुई है बस उसी को ऊपर बनी हाँ बनी है पहले उसकी थिकनेस चेंज करनी थी अब इंडिविजुअल करेंगे बारी बारी कितनी की थी 0.5 deleted इसका भी ऑफसेट ज्यादा है ना देखो इसका भी ऑफसेट थोड़ा ज्यादा है यू कैन चेंज या इसका इसको करें जरा कितना रखा है हमने 0.3 रखा है 0.3 रखा है तो 0.2 करते हैं ठीक है तो कंट्रोल जी करें पॉइंटर ये पॉइंटर किधर है यार पॉइंटर किधर गया आपका ये है ना यार ये इसको मिला दे इधर ये मिला दे मिलाने के बाद you will select the offset where is offset in shapes operations offset कितना रखा है 0.2 ठीक है ये बन गया अब ये देखें दरमियान वाली लाइन डिलीट करें तो वो काम हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल एंड यूज स्क्रॉल एंड जस्ट क्लिक द मिड पॉइंट डिलीट कर दें ठीक ये देखे हो गया बस इस तरह बनेगी क्योंकि हमारी हम ये बस ठीक and you can use ellipse is okay like this या इसको सिंपल ही कर दें छोड़ें बस इसको आप जो है लाइन से बना दें बस या कर्व से बना दें फ्री लाइन से इस तरह ठीक है और इसका भी ठीक है ये मिला दिया मैंने ठीक है फ्री लाइन से इसको एंड मिला दिया इसका ठीक है और इधर से मिला देते हैं इधर से भी अब जरा एक मिनट ये ज्वाइन कर दिया बस फ्री लाइन से फ्रीडम लाइन से जस्ट फ्रीडम लाइन से ज्वाइन द एंड पॉइंट्स नो दिस इज आवर वाइट केबल ब्लैक केबल bare conductor white cable done okay again now you will draw we want to name it okay black one so draw the rectangle on the black cable okay just go to shapes rectangle and draw the rectangle here for example exactly on the you can see my screen the previous things are done or not yeah okay draw the rectangle on the black cable and just copy paste control CV 2 times and move these one rectangle move on the white cable one is on the bare conductor and the
Okay. Now select the rectangles, select all rectangles and go to positions, maybe positions or align center. Yeah, align center. It will be aligned center, huh? Align center. So all rectangles will be aligned center. And maybe and distribute vertically or horizontally. Distribute vertically, huh? Vertically. Yeah, distribute vertically so that the spacing between the rectangles will be same, huh? Align center. Select all rectangles, align center, and then distribute vertically. So all the rectangles will be at equal distance and also will be aligned center. Done? Done? ये कितना सर वो कंट्रोल यार ये देखें आप पुराने के अंदर मैंने बताया इसको if you want to cancel the command just click the pointer option then delete it. क्या करी जा रही है कितनी कमांड्स डाली हुई है कंट्रोल बस इधर क्लिक करें कंट्रोल C and B. Yes, done. And then you will just move it here and then you will select control, press control and select all the rectangles. Escape करें, escape करें. अच्छा, this one, control, this one, yeah. Now you will go align center, yeah. And you see align center, but there is a not the equal distance between the three rectangles, vertical distance. So distribute vertically, distribute center, distribute horizontal, distribute vertical. So you see the distance also. Now you can manually move. For example, with the help of arrow, with the help of arrow, you can move something. You can adjust it. Okay, like this. Okay. Now it's adjusted. Done. Done. Yes, sir. Okay. Now go to text option. There is a text option. We want to use the text option. The same size as the rectangle. We want to use the text option. Okay. Go to text. Text insert, and in the insert option you have. Okay, you have in the insert option. No, you have text here. Yeah, text box. Yeah, text box. Text box. And outside, just place outside, for example. Okay, and write white and write black. BLACK, black. Black. And just align this text inside the rectangle. Just enlarge this text box. From the left side, you can adjust it. From the bottom side, just exact size as the size of the rectangle. Just adjust it. Okay, done. Just move this text box inside the rectangle. Then adjust from the corners. Adjust it as the size of the rectangle. Done. छोड़े escape करें. ब्लैक भी लिखा. ब्लैक का बी बड़ा होता है. एक लेटर लिखे तो बी तो कम से बड़ा लिख देगा. हाँ, रेक्टेंगल में भी हो जाएगा. अगर आपका रेक्टेंगल के अंदर ही क्लिक करें उधर भी सही हो रहा है तो ठीक है. वरना टेक्स्ट लिखें तो उससे जरा उसको एडजस्ट करना. अच्छा, अब आप देखें हाँ, इसको इंटर करें. प्लेस करके आप देखें यहाँ से. ये देखें यार राइट से. ये देखें ऑप्शन मार रहे हैं. जस्ट हाँ या रेक्टेंगल एंड पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल. इसको एंड पॉइंट रेक्टेंगल के साइज का करें इसको. हाँ, ये इस तरह. बस इसका भी करें इधर रेक्टेंगल एंड. हाँ, यस. एंड आल्सो या बॉटम एंड पॉइंट एग्जैक्टली करें. चलें. हाँ, ये हो गया जबरदस्त. उसका भी करें. अगर ना हो थोड़ा जूम कर लें. अगर ये एग्जैक्ट लाइन पे ना जाए तो जूम कर लें. ठीक है, करें. थोड़ा नीचे करें. जूम कर लें. अब ये नहीं हो रहा ना एग्जैक्ट लाइन, तो इसका जूम कर लें. ठीक है, जूम करो ना यार. हाँ, ये देखिए हो गया जबरदस्त. ठीक है. अच्छा, अब इस साइज को थोड़ा बड़ा कर लें. इसको हम बड़ा कर. इस पे क्लिक करें और इस पे होम में जाएं और जस्ट साइज इट बिगर. क्या हो गया?
Just double click and size it. As big as it can be adjusted beside the rectangle. Okay, black. Maybe 24 is okay. Maybe 30 is okay. 30. And font size maybe font size Arial narrow, so that the letters will be narrowed. Arial narrow is okay, I think so. Now just click copy this black. Just copy this black and paste in the second rectangle and third rectangle. Okay, and the second rectangle change it to bare. Change it to bare. This is bare. B-A-R-E. B-A-R-E. Third one is white. W-H-I-T-E. White. Done? No, this is done. Very good. Who have done this? अच्छा चले next. अच्छा इस पूरे को select करें. Just select all and group it. Just group it. Now this is one complete group. Done. Group it. Done? Now you want to save it, okay? So that when you will come next time, it should be saved. So you will save it with your own style, okay? And all the drawings, all the previous drawings, all the future drawings, you will save in one file, one stencil file. That is, for example, I will name it my shapes, and you can name it by your name, for example, okay? So you will name your, okay, I will tell you the process, okay? Just go to more shapes. Here there is an new stencil. There is an option of new stencil. Do you have any new stencil option? ये नीचे shapes का option है, नीचे window है मेरे पास open. ये आ रही है ना आपकी? इसमें अच्छा insert आपका इधर stencil का option इधर होगा कहीं. आप देखें जरा. A new stencil we used last time. आप बताएं जरा किधर new stencil अगर आप निकालना हो कैसे निकालेंगे? ये पुराने AutoCAD वाले new stencil का ऑप्शन ढूंढ के बताएं किसको मिलता है पहले. ये देखें स्टेंसिल्स का ऑप्शन है. ये देखें इस पे राइट क्लिक करें. इस विंडो पे राइट क्लिक करेंगे इस तरह ये देखें इस तरह आप राइट क्लिक करेंगे और इधर कस्टमाइज नए ऑप्शन में तो इधर स्टेंसिल्स का ऑप्शन लेफ्ट पे आ रहा है. राइट क्लिक करेंगे ये देखें स्टैंडर्ड जो stencil है ना stencil that is unchecked. Stencil is unchecked. You will check it, okay? When you will check it, you see new stencil, show document stencil, icon and name, then names, icon, names, icon is. New stencil is now available. Just click the new stencil option, okay? When you will click the new stencil option, you will group it, okay? Select all and group it. Group, where is group? This is group option, okay? Shift Control and G. Shift Control and G is group, and Shift Control and U is ungroup. Okay, now it is grouped. So this is one figure, okay? Oh. Now click the new stencil option is available. Very good. So now you will drag this. You will drag this here like this. You will drag it. The whole will be moved to this smaller window. Done? Done or not? Done. Now you will the name by default name is master.0. You will double click it here. Double click here and select it all and write it. For example, write it wire fan. Okay. Wire fan, yes. Wire fan is okay. And click anywhere in the window. Name is changed. Done or not? No?
डन। क्या रिपीट करूं? कहां से रिपीट करना है? फिगर तो बन गई ना आपकी, ग्रुप तो हो गया है। ये देखिए ये इधर आ गया, ठीक है, पकड़ के उसको पकड़ा तो ड्रैग कर दिया बस। अब as many as you can get here, for example 2 I need 2 3 4, as many as you wire fan 2, wire fan 2, okay, done or not? Done. When it is done, still we have not completed the process, okay, keep it in mind. Now stencil is done, okay. Now you will, there is an option of save option. You see there are smaller option save. You see in the more option there is a new stencil right here and name it wire fan. Now done. There is a smaller option, save option. You see save stencil. You see or not save option? File save another thing, okay? File save is another thing. क्या कर रहे हैं यार? ये सी यार बता क्या? ये तो तेरे साथ क्लास में नहीं है। हाँ? आप क्लास में क्यों आए हो? ऐसे सीख रहे? तंग नहीं करना है ना कि दूसरी क्लास से और ऊपर से तंग करेंगे फिर नहीं अफोर्ड होगा, ठीक है? अच्छा अब आप अच्छा फाइल वाला ऑप्शन यूज नहीं करना, सेव वाला, ठीक है? इधर एक सेव का ऑप्शन है नीचे और स्टेंसिल लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट stencil and there is a save option. Got it? No. There is an option hit the point or not? No? क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? करना क्या उसको? हाँ, पहले न्यू स्टेंसिल करेंगे, यहाँ से फिर ड्रैग होगा, न्यू स्टेंसिल करेंगे, यहाँ विंडो ओपन होगी, उसके बाद ड्रैग होगा। और न्यू how you will bring new stencil, just right click here and there is an option stencil. Check this box first and there is a window will appear here and there are multiple options. Reduce stencil is one of them. Stencil option. Yes, for the newer version, AutoCAD newer version, stencil already available. Otherwise, another option I am telling you. Just go to right click. There is a stencil option. You see here in the screen for the newer version. For newer version, easy option available already, stencil option. But the second option is, if you want to bring stencil, there is an option in the customize the quick access toolbar. Just right click here. Right click on the window in the menu bar. You can say anywhere. You can right click. There is a first option, customize the quick access toolbar. When you will click it here, this window will appear and you will click the all command, okay? Again, I will repeat, just see my screen. Right click, customize quick access toolbar. This window will appear and command. Okay, you will click all commands. Now you will go to stencil. Stencil means S, starting from S. You will scroll down and there is an option in the stencil, this one stencil, okay? This stencil option and this stencil option you will add it, just add it and okay. You see stencil option is available now here in the top, stencil and new stencil, open stencil, both options available here, you see. Okay, in this way you can also bring stencil option on the window, on the screen for newer version.
Done? क्या क्या कह रहे हैं? नहीं है, ये देखे ना, ये मैंने ग्रुप कर लिया है, ग्रुप करके इसको सेलेक्ट करूंगा, ये जहां मर्जी मूव कर लूंगा, माउस से करना, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड रखें और इसको जहां मर्जी ड्रैग करना। अगर ग्रुप हो गया ऐसे नहीं हुआ तो पूरा सेलेक्ट करें, अनग्रुप करें, दोबारा ग्रुप कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, दिस लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू विल save nothing, your effort will be gone, done, you will waste your time, effort will be wasted, huh? So this last option is very important. Every time you will draw anything, you will new stencil and then you will save it, okay? This is first option, and the second option is, this is first option you will do every time. And if you want to see all the things, for example, today's drawing, previous drawings, future drawings, all the drawings in one stencil, how you will do it? Now the second point I will tell you, okay? So that when you will click only open stencil and you will click your shape, all previous stencils you have made, all future stencils, everything will be in one file. You can just drag, all options will be here. For example, the previous drawings will be here. You will just drag it here. 1, 2, 3, all shapes will be available in this window. So how you will do it? This is the second point. Just right now I will tell you, okay? So this is done. Now stencil is saved, but this okay, which is just above here. So save stencil. Save stencil. Just click it here. You will see window will appear. Click it here like this. Window will appear. Save it and you anywhere in the folder, okay? Not in desktop. Anywhere in the folder you can create one folder, get your name, something like that. But in the end, you will copy it in your USB. Maybe next time section will come and edit it. So in your USB, okay? This sensor. Always save in your USB, this folder, always. So okay. Now I will save it. For example, I will save it. For example, my shapes 3, because 2 are done. My all shapes I will save are my shapes 3. Or I can say all my shapes, huh? My all shapes, all my shapes. All my shapes. Like this, all my shapes. Now, all future drawings will save in this file, okay? Shapes, all my shapes. So everything in this file I will save, okay? And save it. Done or not? Done or not? Done. अच्छा, अब सेव हो गया, ठीक है? अब आपके पास डेकोरा है जो पिछली दफा बनाया था आपने? आपके पास है? अभी इधर कहीं है? जरा देखिए, इधर पीसी में किसी ने बनाया था, इधर देखें जरा, पड़ा है किसी के पास? देखें जरा। अच्छा, अब आप जाएं ओपन स्टेंसिल में, इसमें आज देखिए, इसको सेव कर लेना चाहता हूँ, इसको मैं इधर सेव करूँ डी में, ई ड्राइव में, ई भी नहीं है। अच्छा, यूजर में करता हूँ, यूजर में, ठीक है? यूजर में न्यू फोल्डर बनाया विजियो का, और इसमें मैंने बनाया न्यू फोल्डर ऑल माय शेप्स, ठीक है? ये फोल्डर बनाया मैंने और इसको ओपन किया, और मैंने स्टेंसिल 10 का भी स्टेंसिल 10 की जगह भी मैंने लिख दिया ऑल माय शेप्स, कंट्रोल वी, ऑल माय शेप्स लिख के मैंने सेव कर दिया, ठीक है? ये सेव हो गया ऑल माय शेप्स, और ऑल माय शेप यू विल सी इट विल अपीयर हियर, द नेम विल अपीयर हियर, ऑल माय शेप्स, all the things which will be in this window will be saved under the heading of all my shapes, ठीक है? Done? Or available or not? Any previous drawing available in your window or not? Not available?
Okay, if it is not available today, we will modify this line. Okay, like this. Now see my screen. Just convert this. This wire fan is 3-phase. You see, one black, one white is one bare. These are 3 cables. Huh? Now we will draw another other this wire fan. Control C and V. Just Control C V. Just do Control C V. Okay. I just drag from this tensor. Just drag this one. Okay. Though we want to change it. We want to change it. And for you is okay. You will just Control V, Control C V. Maybe you will not save your stencil and previous one will change. You will see what's happening. Okay. So you can, for your just to be careful, you will change this second figure. You can copy paste. Okay. And second figure you can modify. Previous one should be unchanged. Okay. For you just to be careful. हाँ. Okay. अब आप देखें इसके अंदर तो इसको आप इसमें हमें 3 लाइन है ना, हमें 5 बनानी है. रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड बेयर. 5 बनाए. आप इसकी 5 बनाए. ये हमारी दूसरी शेप बन जाएगी. इसको आप सेव करेंगे. ठीक है. कैसे करें? 5 बना के दिखाएं जरा. ये देखिए मेरी स्क्रीन में यू कैन सी रेड ब्लैक और नाउ यू विल ऐड रेड वन. ओके. You can just copy paste black one. You can copy paste black one and you can adjust it accordingly. Just what I'm adjusting, you can see my screen. I just copy paste black one and now I will color it. Okay. I will shape and I will color it. For example, I will go to corner rounding. I will color it red like this. Done. It's done. So easy. Okay. Red is done. Red, black is done. Blue. I need blue one. Okay. Blue. So black again. I will copy paste black one. Red one. I will copy for example red one and I will adjust it. आप भी adjust करें जरा. Adjust it like this. I will adjust it like this. Okay. And I will say this one is my black. This one my black one. This is my black one, and third one which was black, I will change it to blue. Oh, sorry. I will change it to blue. Like this. Now it's done. No, my figure is done. Yours done or not? No. Now I will copy paste rectangles. 4 lines. I will copy paste rectangle and rectangle and text. Both you need to copy. Okay. Text and copy rectangle like this. I have done. I will say it. This is red. This is my red. चले. ये हो गया. इसको मैं red, black, blue, BLUE. Bare white. Yeah. Red, black, blue, bare white. This sequence will be easy for you for just to modify the previous drawing. Okay. Mine is done. You can see mine and just copy paste and just manage it. I just copied the red line, change the color and like that. And just group it. In the end, I will group it. Now this is my second figure. Okay. Wire fan 2, for example. Wire fan 3, I can say. Now again, I will drag it here and I will name it wire fan 5 cables. I will say 5 cables. Okay. Wire fan 5 cables. Just to remember it. And wire fan 3 cables. 3 cables. Like this. Now 2 of my shapes done. Save. Done or not?
करें करें, आपका भी हो गया, ये क्या बना दिया साहब जी। देखें ये इजी था, अगर आप ये देखें इतना लंबा चौड़ा क्यों काम कर रहे हैं। इसको कॉपी करें, जस्ट इसको अनग्रुप किया, अनग्रुप कर ले अभी, अनग्रुप कर दिया, ओके कर दे बस। अच्छा उसके बाद देखें इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यस ड्रैग इट हियर, just adjust it like this and adjust it like this, and adjust it like this is okay, done. Now copy paste, control C and V, copy paste it here and then again बस ठीक हो गया ना। अब इसको कलर करें आप रेड, फर्स्ट वन रेड एंड कॉर्नर राउंडिंग लाइन रेड, red color, okay. This one is black, the third one is blue, just click it here, blue color यही है ना, blue color, ठीक है, red black blue and bare and white is okay। बस ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको मजीद भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ये लग रहा है ऐसे कर दें, बिल्कुल ठीक है मेरा। Now you can copy it, for example you want to copy it, control C and V, you see rectangle is copied, and again when you click it here, control C and V, you see text is copied, text, place the text here, simple. Now click it here, control C and V, rectangle is copied. Now click it here, control C and V, text is copied. Now why the size is very small, why you don't change the size, क्या करते हैं, साइज क्यों नहीं चाहिए, अपना काम पहले करो ना। एरियल फॉर एग्जांपल, एरियल नैरो इज ओके, बोल्ड भी कर सकते हैं इसको। अच्छा इसको फॉर्मेट करना है, इसको क्लिक करें और इधर फॉर्मेट का ऑप्शन, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट, किधर है, नहीं वो फॉर्मेट option is like this one, there is a format painter will be highlighted, हाँ ये format painter, ठीक है, वेरी गुड, ये वाला है। अब आगे इसको अनग्रुप करें, अनग्रुप करने ताकि वो फॉर्मेट, यस फॉर्मेट लाइक दिस, ओके। ये आपने टेक्स्ट लिखा है, रेक्टेंगल बनाई नहीं है, रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा वो रेक्टेंगल काफी होगी, क्या चक्कर है, तो ये रेक्टेंगल को कॉपी करें, ठीक है, टेक्स्ट नहीं करना हमने यार, अपना काम किया करो, फायदा क्या होगा, आप कर रहे हो उधर, उनको बताने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपना काम नहीं कर रहे। इस रेक्टेंगल को कॉपी करें, कंट्रोल सी वी, अच्छा इसको ब्रिंग टू बैक भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, ठीक है, ब्रिंग टू सेंड टू बैक, यस सॉरी, इस तरह, और नहीं वो फिर जो ना वो हो गया है ना। फिर इसका दूसरा लिया कि फिर आप रेड को भी ना
रेड को भी जो है ना, रेड को भी सेंड टू बैक करें, लेकिन वो ये लंबा प्रोसेस है, आप इस तरह के ना चक्रों में पड़े, सीधा सीधा काम करें। अच्छा, इस टेक्स्ट को बाहर निकाल लें पहले, अद्धा काम छट गया आप गए हो यार, अल्लाह दे, अपना काम पूरा इंक्वायरी हो जाए तो यार टाइम तो है। कंट्रोल सी और वी, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अलाइन, अलाइन सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, सही है, ये हो गया। अच्छा, वो मेरे ख्याल हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया ना, टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया था, इसको पूरे करें। वो वर्टिकली, ठीक है, मिसाल तो ये वाला, दिस वन, अब ठीक है, सही। अब इसको हम एरो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एरो यू कैन एडजस्ट इट लाइक दिस। हियर इज ओके, आई थिंक सो, हियर इज ओके। नाउ जस्ट डिलीट दिस लाइन, black color for example, you can drag this window here. Oh, yeah, it's okay, exactly, yeah. Delete this line and like this. हाँ, वही चक्कर है मुझे लगता है, इसको करते हैं, इसको सेंड फ्रंट कर लेते हैं, सेंड कर, हाँ बस ठीक। इसको भी फ्रंट कर लें, सेंड टू फ्रंट, इसको भी फ्रंट फ्रंट कर लें, कंट्रोल सी है। Okay, change the name, red, black, blue, where white is okay, right red and here blue. Right, red, yeah, red, R-E-D, red. Okay, blue, B-L-U-E, blue. B-L-U-E. Done? Okay. So now you will group it. For example, you will group it and there is a group option, this one group. So group done, okay? So previous one was fire van and this we know about. If you want to delete it, for example, delete the master, okay? Just delete it here. No need, okay? Because only one is enough, because no changes we have done last time. So this one is first one. This one was first one. और ये जो है हमारा सेकंड है, इसको सेकंड को भी ड्रैग करें, जस्ट ड्रैग दिस हियर लाइक दिस एंड आई विल नेम इट फायर फैन 5 cables, 5 points लिख देते हैं, फायर फैन 5 points, POINT points, 5 points, and wire fan जो previous है, this previous one is just double click and write it space and write it 3 points. Okay, done. This is done. These two are saved. Okay. Now, if you want this, for example, you want to delete it first, just delete this. Like this. So you can delete it. You can drag it here like this. Okay. You're done. So you can see here. Now these two stencils which you have you want to save it for future use. Okay. All the time you will just open it. No, you cannot draw this because it takes whole lab. Okay. Next time you cannot draw. You will use it. Okay. We'll draw new shape and you will use it. Okay. So you see, you will save it. Just click it here, and all my shapes already saved. And you will click it here, save. You see, the save option is now disappeared. It means now save is done. If save option is available here, it means something not saved.
Got it or not? So here now it is saved, okay, in all my shapes. The stencil named all my shapes, okay. Now this is shape. Now as many, for example, this I need 2 times. This I need 2 times like this. I want to make a new drawing which need two times, okay. So you can drag it as many times as possible. So now this is my new drawing, for example. Now I want to save this drawing, okay. So you will save it, for example, in the file. You will save it, okay. So for example, drawing 1, and I will say in the D there is a Visio, my all shapes. Okay, here my drawing 1, save it. Okay, and here again I will repeat the same process here in my screen, like this, like this. Now I want to save this, and I will go to file and I will save it, and browse, and I will save it in my folder like this, and I will save it into drawing 1 already there, I think so. Drawing 1, and I will say ed7c-c. Okay, I saved it. Okay, with this now, and you save with drawing 1. Okay, now see the difference. I will close this. I will open file and I will open new Visio file. Okay, new, and go blank drawing and US units. Okay, create this one, this file, new file. Okay, new file, open the new file, in file, new, new drawing, new file, new drawing US units. Okay, this is I'm done. Now I want to, because I want to draw something new, but I need previous drawings. So how I will access those drawings? Okay. Now I'm telling you this same process. So you will go here. There is a open stencil, new stencil. First I will tell in my screen. Just see, and I will repeat the same. Okay. In my screen for your version students, you can see here. There is a my shapes. There is an open stencil option. Is open stencil. Okay. Open stencil option is available. Okay, here you can search it. I will search it again. And also from the right click, quick toolbars, there is also this stencil option available, which I have accessed it. For example, here stencil, and this stencil option here, I will click it here. You will see there is an option open stencil. Okay, and I will go open stencil. When I will go open stencil and I will access my location, there is a all my shape. There is all my shape. I will click it and open it. It will show some error. For example, the file is open for modification in this instance, like that. You will click OK. Okay. So you see, all my shapes are again appeared here. Now I can use previous shapes. I like here. You can see all my previous shapes are available, and I can use it, and I can draw a new one, and I can merge it like that. New shape will be there. So the same process I will repeat it here. Okay. For example, here new stencil. अच्छा, ओपन स्टेंसिल का पुराने ऑटोकैड में देखें जरा, किसको पहले समझ आती है ओपन स्टेंसिल? देखें जरा, किसी को ऑप्शन आता है पहले? जिस तरह ये मैंने न्यू स्टेंसिल का लाया हूं ना, ये देखें न्यू स्टेंसिल यहाँ से आया, न्यू स्टेंसिल में क्लिक किया ना यहाँ से, ये देखें, तो ये न्यू स्टेंसिल का इसके अंदर ऑप्शन है। इसमें ओपन का भी होना चाहिए, वैसे इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है। किधर है ओपन फाइल में? अच्छा, फाइल में जाऊं, ओपन जाऊं, ओपन में ऑल माय शेयर्स करता हूं। ये तरीका भी ठीक है, वेरी गुड। रोल नंबर क्या है आपका? क्या है? 43, इसके 10 पॉइंट लगे। I
So this is like that, and stencils another. These two shapes, all my shapes, these two shapes, I will save it to another file, which for example, I will say open my stencil. I want this one to my shape 2. I name it my shape 2 and all my drawing shape 2. Okay. And today's 2 drawings, I also want to add this to that all my shape 2. Okay. I want how to add, just see my screen. So you see, right click this stencil and I will go to add to my shape and add to existing stencil, existing. Okay. I will say add to existing, and existing I will open, for example, my shapes 2. My shapes 2, all my existings are saved. I will click and open it. Okay, I will open my stencils, open stencil, and there is all shape 2, my shape 2, sorry, my shape 2 open. You see, everything is here. And in the end, you see this one option available, these 2 options also available, which I have drawn. These 2 drawings also saved, you see. And the previous drawings, you see, we have made this drawing. Just see my screen. अगर आपके पास ये ड्राइंग नहीं है, घर से बना के लानी है, अगली दफा ये सारी होनी चाहिए जो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं. ठीक है. इट शुड बी पार्ट ऑफ योर सेंसर में सेव करके यूएसबी में हर चीज रेडी होनी चाहिए. यूएसबी लगानी है, ओपन करनी है, जैसा मैं कर रहा हूँ. ये देखे, ये फिगर बनाई थी, ये हमने ये स्क्रीन बनाया था, ये इस तरह का स्क्रीन, मेरी स्क्रीन देखें. अच्छा, उसके बाद हमने ये शेप बनाई थी, ये देखें, इस तरह की बनाई थी. ठीक है. ये सारी मेरे पास अवेलेबल है, ये देखें. उसके बाद देखें, ये शेप बनाई थी, ये देखें, नजर आ रही है. ये मैंने बनाई थी. इस तरह की जितनी भी बनाई थी आपकी सेव होनी चाहिए पिछले रिकॉर्ड में. मैंने उसके भी नंबर लगाऊंगा नेक्स्ट टाइम. अच्छा, इसके बाद हमने ये बनाई थी, ये देखें, ये मैं लाता हूँ, ये देखें, ये डेकोरा बनाया था और उसके ये कनेक्शन किए थे, ये नजर आ रहे हैं. ये भी बनाई थी, ये भी मेरे पास सेव है, ये मैंने सेव की हुई है. आप भी इस तरह सेव करें, अपना काम सेव रखें. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने ये देखें, इस तरह की मैंने नई शेप बनाई थी, फिर एक इस तरह की बनाई थी, और तो इस तरह डिफरेंट सेक्शंस को करवाई है, तो वो सारी सेव है. ये देखें इस तरह. अच्छा, ये सारी शेप्स मैंने एक उसके अंदर सेव की हुई है, समझ रहे हैं ना. तो आप भी इस तरह, ये देखिए, सारी स्क्रीन में जो भी आपका काम है इस तरह सेव नजर आना चाहिए. डेकोरा भी मैंने किया था, वो किधर है, डेकोरा इंडिविजुअल भी किया था, ये सिलेंडर भी किया था, ये देखें सिलेंडर भी सेव है, ये देखें. अच्छा, उसके बाद डेकोरा किधर है, ये डेकोरा, ये सिलेंडर हो गया. अच्छा, उसके बाद मैंने ये देखें डिफरेंट शेप बनाई थी, कलर, ये शेप कलर डिफरेंट है. ये देखें, नहीं ये नहीं है, ये वाला, ये देखें, ये डेकोरा लेवल से बनाया हुआ है, ये भी मेरे पास सेव है. ठीक है. ये देखें, ये वाला. तो इस तरीके से आप देखें, ये सारी शेप्स आपको नजर आ रही हैं. इसमें से कोई भी मैं यूज करना चाहूँ इन फ्यूचर, आई कैन यूज इट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड जस्ट यूज इट. ओके. So you will also save it. Keep it in mind. Next time, extra points, I will check your saved things in your folder. It will be available in your PC. Okay. Visio, especially Visio, not AutoCAD. So in this way, we have done. How much time we have? चलिए वैल्यूशन कर लेते हैं, फिर आगे बस करते हैं. ठीक है. अच्छा, नहीं, एक काम तो करें ना, डेकोरा को हमने इसके साथ सेलेक्ट, इसको तुम कंप्लीट करें ना. कैसे करना था भला? ये देखें, ये काम करें आप. डेकोरा आपके पास है इधर? नहीं है तो फिर लाएं, जिस तरह मर्जी है, पुरानी फिगर पड़ी होगी शेप. ये देखें, इस तरह कनेक्शन करें आप. ये देखें, ये कनेक्शन कर दें तो ये हमारी आज का टास्क कंप्लीट हो गया. इस तरह करके दिखाएं. जो ये करेगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे. ये पूरा डेकोरा किसके पास होगा, मुझे पता चल जाएगा ना कि सीरियस बंदा है. चलो करो जरा. ये देखें, अब इसके स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप भी करें जरा. ये बाकी डिलीट कर दें.
अच्छा उसको आप ओपन कैसे करेंगे? वो जो पिछली आपने सेव किया उसको कैसे लाएंगे? ओपन में, ओपन ऑल माय शेप्स, ओपन, ये आगे इसी का, इसको पहले को ड्रैग करें। चलो इसी को कर लो, इसी को कर लो, चलो ये भी ठीक। मैं भी इसी को करता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट एंड आई विल ये ऑप्शन इधर से 5 वाला करते हैं। ये 5 वायर्स ले इस तरह, ये देखें 5 वायर ले लें, रेड ब्लैक ब्लू जो आपने बनाई है ये, ठीक है। उसके बाद डेकोरा को ले, डेकोरा लें जरा, डेकोरा को इधर इस तरह लगाएं। ये डेकोरा क्यों नहीं है? डेकोरा लगाएं जरा। क्या कह, क्या ऊंचा बोलना यार, नहीं समझ आ रही। क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ है? किधर पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है मोबाइल में, मोबाइल उधर रहा है ना स्क्रीन में, ले ले। अच्छा डेकोरा में देखें हमने कनेक्शन पॉइंट बनाए थे, डेकोरा में है भी 5 पॉइंट, 5 केबल्स हैं, इनके कनेक्शन लगाएं, कनेक्शन लगाएं। कनेक्टर आपके पास नहीं है? किसी यूएसबी में ले लेंगे इससे और इधर कॉपी कर लें। किसी के पास नहीं है दूसरे यूएसबी में ले और इधर ओपन करके इसको इसमें ओपन कर लें, ठीक है। और हर एक का डिफरेंट होना चाहिए, मुझे पता चला। कॉपी पेस्ट किसने किया, मैं उसके तो माइनस स्टैंड में माइनस कर रहा हूँ ताकि उसको बिल्कुल ही पीछे करें, सी डी पे ले जाएंगे, सी पे, समझ है ना। इसको डिस्कस करेंगे, किसी का छापा मारे, कहीं भी पकड़ा जा सकता है वो। पिछला सारा ही वाइट हो जाएगा सारा, सही नहीं। अच्छा, with the help of connectors I'm doing this and you will finish it like this. I will connect a connection point like this, you see. Oh yes, before this you also need connection points for this wire fan, okay. So end point, see my figure. I am now, you see that, just delete this one, delete this one, and you need the connection points here, okay. So for connection points here, you see there is a connection point. कनेक्शन पॉइंट किधर ऑप्शन है, जरा बताएं मुझे। कनेक्शन पॉइंट आपके इधर पुराने में किधर ऑप्शन, जरा देखें। कनेक्शन पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट न्यू में मैं बताता हूँ। न्यू में ये है, ये देखें इस तरह का आता है, ये देखें क्रॉस लिखा होता है, ये क्रॉस बना होता है और उसमें कनेक्शन पॉइंट है। वैसे ये कनेक्शन पॉइंट आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1 के साथ, शिफ्ट कंट्रोल प्लस 1 के साथ आता है। लेकिन इधर है किधर? वैसे इधर भी देखना चाहें अगर हम, किधर है वो, इधर होगा इधर, हाँ ये इसमें होगा, ये देखें ये कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है। कनेक्शन टूल पॉइंट, ये देखें इसमें, ये क्या चीज है, ये इसमें कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर टूल। इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यही है कनेक्शन पॉइंट, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करके यहाँ कनेक्शन पॉइंट बनाने, ताकि उस पॉइंट से हम कनेक्ट कर सके। वी डोंट हैव द कनेक्शन पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट इज जस्ट टू कनेक्ट दी, just to start the connection, okay. And here we don't have any connection, no, we want the connection points, okay. Just click here and click here and just click the connection point, and here you will just press the control button from your keyboard, control button, and just zoom it. You will see, click it here, again click, you see one point is placed. Now go to Sanger, again press control, click it here, you see one connection point is there. Again scroll and again press the control of the keyboard and left click, mouse left click, connection point is there. Again third one, press the control and like this, इसका इधर आकर में लगा दे, इधर press the control and click here. Now connection points are there, okay. You see connection point, escape or pointer, you see connection points now available. Now we can connect it. There, किधर है? यूएसबी लगा दिया? अच्छा ठीक है भाई। अच्छा यूएसबी लगा दिया, आप डेकोरा इधर से करेंगे, इमेज पिक्चर, पिक्चर फ्रॉम फाइल, एंड वी हैव पिक्चर फ्रॉम यूएसबी, एंड यूएसबी तो खाली है, उसके लैपटॉप पे लगा नहीं वो कॉपी नहीं किया उसने? यस कॉपी किया यस हमारा करा। So have you made your gig बना ली आपने फाइवर पे?
विजियो की और ऑटोकैड की ऑर्डर लेना है आपने, कोशिश करनी शुरू कर दें अभी से। और उसको ऑन करने के लिए, फॉरएवर करने के लिए उसकी एक भी है जिससे आप ऑन कर लेते हैं। फाइवर की ऐप है कि रात को सोने की जागने की जरूरत नहीं है, जस्ट वो ऐप इंस्टॉल कर लें, थोड़ी देर बाद खुद ही फ्रेश रहेगा और आपको शो करेगा कि आप ऑन है, फाइवर पे ऑन है। समझ रहे हैं ना, आप सोए भी हो तो ऑन है। वो ऐप है, उसका नाम क्या है आप ढूंढ के लाना, नेक्स्ट टाइम मैं भी ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा। वो ऐप इंस्टॉल कर लें उसे, ताकि आप ऑन होंगे तो डेफिनेटली फिर ऊपर आएंगे ना, तो तब जाके आप कोई देखेगा तो फिर ऑर्डर लेगा। गिग बनाई हुई है आपने, किसने गिग बनाई है? विजियो की और ऑटोकैड की एक एक गिग बनाई है फाइवर पे। किस हु हैव मेड गिग ऑन ऑन फाइवर? फाइवर इज द ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी, by taking orders of Visio and AutoCAD. Who have made the gig on Fiverr? लास्ट टाइम मैंने बताया था गिग का, तो मैंने नहीं बताया तो आपने जो है ना पिछले लेक्चर में वेबसाइट इसीलिए बनाई है। अगर आपके नहीं बताया तो दूसरा लेक्चर देख रहे हैं उसमें किसी बताया होगा, ठीक है? तो आप उसको देख लिया करें किसी को, ठीक है? तो आप ऐसे ही ना बिल्कुल कोरे कोरे ना करें, किसी और के साथ, किसी और ने कुछ और किया होता है, आपने कुछ और किया होता है, तो इस तरह आपको एडिशनल चीजें मिलती रहेंगी। सही है? तो आपने नेक्स्ट टाइम गिग भी बना के लानी है। गिग मैंने फाइवर पे एक वीडियो बनाई थी, इधर एक सेक्शन में बताया था गिग कैसे बनानी है ऑटोकैड पे या विजियो पे। तो आपने 2 गिग बनानी है अपने हर बंदे ने, एक ऑटोकैड पे, फाइवर में बना ले, काफी है। जो एडवांस लर्नर है, कुछ एडवांस भी हो गए जो पहले से काम कर रहे हैं फाइवर पे, हो सकता है वो अपवर्क पे बनाए, उनका अलग इशू है, वो अपवर्क पे बना ले। लेकिन आप इनिशियल जो बिगिनर है वो फाइवर पे बना ले, ठीक है? कॉपी पेस्ट ज्यादा नहीं करना, छापा मैंने बताया था कैसे मारना है, किसी और का ही करना है हमने कॉपी पेस्ट, लेकर उसको बिल्कुल उसको आपने प्लेजर रिमूव कैसे करना है, वरना फाइवर वाले आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। फिर नए ईमेल से बना सकते हैं वैसे, लेकिन पुराना ईमेल वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? इतनी प्यारी प्यारी फिगर बनी, आप ऑर्डर लें ना यार, इस तरह का कोई ऑर्डर लेगा तो बनाए जल्दी करो ना यार, इतनी देर लगा दी। कॉपी कर रहे क्या कर रहे हो? कॉपी इतनी बड़ी फाइल है, कॉपी हो रही है, कॉपी करेगा और इनको यूएसबी दे। ये वैसे टीम्स में अवेलेबल है, टीम्स पे आप, टीम्स पे आपके पास मोबाइल में डाटा केबल होनी चाहिए हर टाइम। मैंने टीम्स पे शेयर की हुई है, ये देखें फाइल, तो आप टीम्स में ले लें। ये टीम्स में पड़ी है, ये देखें। अभी दोबारा भी शेयर कर देता हूँ, ये देखें इसको। तो आपका डाटा केबल हो, जस्ट इसके साथ लगाएं और फौरन आप इसको, ये देखें मैंने कर दिया दोबारा कॉपी। ठीक है, ये काफी होगी। बस आपके पास डाटा केबल होती है तो आप जस्ट डाटा केबल लगाएं मोबाइल की, डाटा केबल लेके आया करें लास्ट नेक्स्ट टाइम अंदर जाना यूएसबी के। अच्छा नहीं आपको होगी, फिर यूएसबी में जाएगा, इस तरह नहीं हो रही ना, आप जरा थोड़ा साइड से। ये है ना? अच्छा ये किस में है, ये किसके अंदर है आपकी वो इमेज में? इमेज है, इमेज नहीं है इमेज। अच्छा ये विजियो फाइल है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, फिर ये ओपन होगी, इस तरह होगी ओपन, मेरे ख्याल ओपन में होगी है ना, ओपन से होगी ना फिर यार, बताना था ना विजियो फाइल वो है। ये अगर ओपन से भी वो आपकी विजियो कौन सा है आपका? ऑल विजियो आ रही है, किस चीज की फाइल है यार ये जो ओपन नहीं हो रही? तो स्टेंसिल ही है, स्टेंसिल नहीं करनी आपने, स्टेंसिल, अच्छा स्टेंसिल है, फिर हम स्टेंसिल ओपन करेंगे। ओपन स्टेंसिल तो ओपन हो जानी चाहिए थोड़ी, ये देखें ना स्टेंसिल का क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं स्टेंसिल करूँ यहाँ, स्टेंसिल में नहीं आ रहा। उसको अच्छा, इसको इमेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कर रहा है, इमेज पड़ी है मेरे पास, इमेज ही दे रहे हैं बस। ये देखें इस तरह ना, आप इसको जेपीजी में करें तो सेव एज करें, और जेपीजी करें और सेव करें, ठीक है? ओके कर दें। तो ये अब जेपीजी में सेव हो गया। मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ से इमेज में, फ्रॉम फाइल, ये देखें सेव होगी, ठीक है? इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये देखें आ गई है, ठीक है? तो आप इमेज में सेव करके ना इसको सेव एज इमेज करें और वो दे दें मुझे। वीडियो मेरा 3-4 दिन के लिए था तो वीडियो उड़ गया, वो फाइल ही पड़ी है, शायद फाइल तो इसलिए हो गया कि इमेज पड़ी है, वैसे मैंने किसी और के पास नहीं है विजियो में फाइल। ये डेकोरा फाइल जो लास्ट टाइम बनाई थी, किसके पास विजियो में पड़ी है? अभी किसके पास पड़ी है?
उसको एक्स्ट्रा पॉइंट भी देंगे जिसके पास है, जल्दी बताओ जिसके पास जल्दी ओपन करके दिखाएं। डेकोरा जो लास्ट तक आया था जिसके पास विजियो में है, ये देखें ये लड़की के लिए होता है काम। ये स्पीड डाउन यूएसबी ले अच्छा चलें। अच्छा अब आपकी ये इमेज आ गई है, ये मेरी स्क्रीन में भी नजर आ रही है और उधर भी अभी ये देखिए। अभी हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाके पिक्चर में फ्रॉम फाइल और फाइल जाके हम इसमें कहेंगे लगा दिए। ये यूएसबी का तो नहीं मसला, इसमें तो लैब 7 आई नहीं है। आपने यूएसबी में सेव नहीं की मेरे ख्याल, ये यूएसबी दे, वो यूएसबी नहीं सेव किया आपने, किसी और जगह कर दी। ये यूएसबी दे उनकी तरफ, यूएसबी में सेव एज करें जेपीजे फाइल। अच्छा मीनवाइल जिसके पास डेकोरा भी है और ये जो हमारी वायर फैन बनाई है, इनको कनेक्ट करें। कनेक्शन पॉइंट हमने वायर फैन के भी है मेड कनेक्शन पॉइंट, एंड नाउ जस्ट क्लिक connector, just click the connector and connect the connection points, because we have 5 points, 5 wire fans and 5 decora points. So click red to one decora point, black to other decora point, blue color, just connect this with another third one like that. For example, red one, I will connect it here. Yes, I don't mention connection points here because I was mentioning there, and I need here also. This one and this one. Now connection point done. Now I will just connector. I will use the connector and I will connect it here. The other one to the black, the third one to the blue, the fourth one to the bare, and the fifth one is to the white. Okay. And after that, I will adjust. I will click the line and I will adjust it. For example, like this. I will move left, right, top, bottom, just to adjust it, so that all the 3 cables will not overlap. Okay. It should not overlap. You see? No, they are not overlapping. And here it is overlapping. You move it like this. And also move it like this. So they will not overlap from any point. You see? Now all the cables, you see which cable going to which point. It is clear. Before it was not clear. Done? Yeah, this is done. Now you will just these connection points, because this is image file, this is image file. Okay, this is not actual file, so we need connection point. So for connection point, we'll go here
connection point, and I will click it. I will zoom it here, and I will make connection point this one. Okay, this one, then this one, this one. Only 4. Okay, only 4 is okay. 4 and 5th, maybe 5th we will connect it here because you don't have 5th point. Okay, you have only 4. Maybe 5th we will connect it here. Here, okay, okay, here, okay. Like that. Okay, now I will go to a connector. Here there is a connector point, and I will connect red one. I will connect red one here, black one here, blue one here, white for example here, and this one here. Okay, done. Escape. Pointer. Now you see here that these are overlapping. You cannot see which this line going to where. For example, at this point you see all lines are. So you will change the position. For example, this line you will like this. You see now these are. This line you will, for example, click this line and just move it forward like this. Now see, all lines are clear. And similarly, you go. This line is okay, I think so. You can move like here, and this line you will move it here, so that it will be like this. Done? Done? Now you will, for example, the same format, red line, the same format you want to apply on this line. How you will apply? You will select the red line, only red line. Click the format option. Where is format? Yeah, format. Just click this here. So red line, red. Okay. Now again, click the black line, black cable. Click the format option and click this one. Overlapping, we can change again the distance. And then there is a blue line and format, and you will click the blue line. And then bare line, format, and you will click the bare line. And you will click the white line. Yes, white line, because your white line is not one line. Your white line is the combination of 3 and 2, 4. So you will join it first, okay? You will join it first. How you will join it? You will join it. You will click it here. This line, this end point, this line, and you will join it. Join is, I think so, in the operations, there is a join option, join. Now this line is 1. Okay. This one and also this point, end point maybe selected. Yeah, this one and this one, you will join it again. Operation join. And similarly, you will join the end point here. Yeah. This one and this, you will join it. So now I think so this one is 1. If I will control C and V, yeah, this is 1. Okay. Now I will just format again. I will click it here. Format, and I will apply this here. Not applied, huh? Format. Okay, you have to draw again, I think so. Because you are manually drawn, so it will create problem. So you have to draw this same line. For example, you can also change this format accordingly. Okay, right now is okay. So this done. If the space is, you see, you can change it anywhere like this. Okay, and you can change the distance. For example, here like this. Here like this. Here you can change it like this. Okay. No, I think so. Okay. This why this is bring to okay. So in this way, done. Now it is done. Now this shape, for example, this is our new drawing.
You can save it here. For example, you can save as and drawing number 2. For example, this is your drawing number 2. And for example, you want this also as your stencil. For example, this complete drawing controls. Control A and group. Okay. Now this you can also drag it here, and you can say that this is my shape 1. For example, shape 1, wire fan and decora. Like this, just to remember it. Wire fan. So this is done. Save, click save. Now it is saved. Now you can in the future just drag it here. You can use it also. You can use this one. You can use this one, anything. Okay. So like this. So इधर भी आप देखें इसमें फॉर्मेट करना है. Just click the red line and format option. Format option is there. You see here the format option, and I will click it here. Red is done. Black, just click the black one. Format option, format painter, and I will click the black one. Blue one, I will click the blue one. Format option. Oh, sorry, not corner, format. Format option, and I will click this line. And then there is a bare. Format option, and I will click bare. And then there is a white, and my white, you will see my white line is not the combination of two lines. It will be same format will be applied. You see here white is done. Okay. So in this way, now you can adjust the size like this one, like this one. You see here, I will adjust it here. For example, I will adjust it like this. You can also done if it is still crossing, or you can adjust it like this, and you can adjust it, for example, here, and you can adjust it in this way. You see. Yes, this is done. क्या कह रहे हैं? एक मिनट सब्र करें ना, मैं ये तो करने दें. क्या क्या बन गया? बस अभी 10 मिनट पड़े हैं ना. 10 मिनट पड़े, सब्र करो, तंग ना करो. अरे पीछे के 5 मिनट पड़े हैं ना अभी. अच्छा, ये बन गया हमारा. ठीक है, अब इसको मैं ग्रुप करता हूं. कंट्रोल ए, and I will group it. You see, and I will also save it to my shapes too. I want to shape it to my shapes too. Yeah, here. Yes, you will apply yes. And you see here, I will say this is my shape decora fire van connections. ठीक है, ये मेरी शेप होगी. सही है, ये भी मैंने सेव कर लिया. अब ऑल माय शेप्स आर सेव्ड. इफ आई विल ट्रैक इट हियर लाइक, ओह सॉरी, ये नहीं, डेकोरा दिस वन. ये देखिए शेप बन गई. अब ये सारी शेप्स जो है मेरे पास सेव है. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं. डन. अब जरा अपनी स्क्रीन में आके देखता हूँ आपकी स्क्रीन किसने क्या तीर मारा है, तो उसके बाद जो है ना हम उसको